अरे ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये तो 4 महीने पहले दिया था। अरे ये लोग काम ढंग से करते ही नहीं है, इतना वापस रिविजन करते रहते हैं, क्या हो रहा है? भाई तूने पीसी रखी है क्या? यार सिस्टम्स फॉलोअप्स के लिए मैंने पीसी तो रख ली, बट ये फॉलोअप उसकी परफॉर्मेंस कैसे जज करूं यार? वो खुद इतना काम नहीं करती है, एकदम घूमती रहती है, मतलब कुछ काम ही नहीं है उसके हाथ में। उसका काम मैं जज करूं तो करूं कैसे? हम ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लगा के हम इतनी चीजें ट्रैक तो कर रहे हैं, पर इतने सारे डेटा का मैं करूं क्या? मतलब इसको डेटा एनालिसिस कहां से करते हैं? इसका फायदा क्या है इतना डेटा का? हमने हेल्प टिकट लगा के इतनी सारी हेल्प टिकट्स तो ले ली, पर इसको सॉल्व कौन करेगा? ये तो टीम तो आपके हाथ खड़े कर दी, सॉल्व कैसे करेंगे पता ही नहीं। बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है यार ये तो। If you are facing these kind of problems in your business, then it might be because of two reasons. Number one, you don't have the right core team or your MDO in place, or you don't know how to do a SUM, a system upgradation meeting, which is structured and in the right manner. To have the right MDO in place, you need to have 5 people. Number one is executive assistant, EA. 2 is a process coordinator, PC. 3 is an MIS executive. 4 is a CRM, customer relationship manager. And 5, a training executive. If you have the right core team in place, you have the right MDO in place, then you need to learn how to do the SUM, a very structured process जिसके थ्रू आप ये टीम के साथ मीटिंग एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, वीकली तरीके से 30 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दी SUM. दिस SUM, सिस्टम अपग्रेडेशन मीटिंग, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्योर. प्योर की स्पेलिंग यहां पर थोड़ी सी अलग है. दिस इज कॉल्ड PIUR. P stands for पेंडिंग PC फॉलोअप्स. अब हम लोग अपनी कंपनी में एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर करके एक पोजीशन तो बना लेते हैं, जहां पर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर इज फॉलोइंग अप फॉर ऑल पेंडिंग चेकलिस्ट्स एंड FMS टास्क, प्रोसेस बेस्ड टास्क्स. बट हम PC की प्रॉब्लम्स को हम समझते नहीं हैं. सो यहाँ पर हम PC की परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे बेसिस ऑन द नंबर ऑफ ओवरड्यू टास्क्स दैट आर देयर इन द सिस्टम. अब ये मीटिंग क्योंकि हमारी वीकली हो रही है, तो वीकली हम परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे कि PC के ओवरड्यू टास्क कितने हैं. अब अगर लास्ट वीक से इस वीक अगर बढ़ जाते हैं टास्क, देन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज द रोड ब्लॉक्स दैट द PC इज फेसिंग विद द एम्प्लॉइज टू गेट द वर्क डन. नाउ द बिजनेस ओनर्स रोल हियर इज टू हेल्प द PC कंप्लीट हर फॉलोअप्स. उनको कोई एक्सेस चाहिए तो वो एक्सेस दे. If there are any approvals pending, then approvals should be given. Or if there is any cross team alignment that needs to be done, तो ये करना चाहिए. This is how pending PC follow-ups, P, will be solved. I stands for internal efficiency. We will do a surgical strike on one system. We will go deep dive into one system only. अब एक सिस्टम में देखने के लिए first we need to look at the flow chart. क्या वो flow chart सही से डिजाइन किया हुआ है? क्या सारे aspects of the process उस फ्लो चार्ट में कवर्ड है? सेकेंड थिंग दैट वी लुक आउट इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स फ्रॉम द सेम डूअर्स. अगर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स फ्रॉम द सेम डूअर्स है, देन वी शुड ट्राई टू कंबाइन दीज स्टेप्स. देन वी शुड लुक एट थिंग्स दैट वी कैन ऑटोमेट कंप्लीटली. एग्जाम्पल, अब जैसे हमारा प्रोसेस में अगर हम ई-वे बिल जनरेट कर लेते हैं फ्रॉम आवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, देन दैट स्टेप इज नॉट नीडेड सेपरेटली. सो steps that we can fully automate, ये हटा देने चाहिए. Then we also look at branches जो already dead हैं, जहां पर ट्रैफिक नहीं है. Studying the data traffic of the flowchart. तो वो जो branches जहां पर data traffic नहीं है, जहां पर actually कभी काम जाता ही नहीं है, we should remove these branches. Will help you become more efficient. Any process that we run is a cost to the company, and if we reduce even 1 to 2% cost each week, it would create amazing results in the long run. U stands for unresolved help tickets. यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर या फिर जो लीडरशिप टीम है, उसकी हम हेल्प टिकट्स रिजॉल्व करते हैं, उसके इश्यूज हम सारे रिजॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज लाइक अ बैचिंग वेयर हम वीकली बैठ के 30 मिनट्स की मीटिंग में सारी अनरिजॉल्व हेल्प टिकट सॉल्व कर दे रहे हैं. द बिजनेस ओनर्स रोल नॉट ओनली टू गिव द राइट
corrective action for all the problems, but also to suggest the right preventive action for all the problems. यहाँ पर corrective action and preventive action को अगर हम templatize कर लेते हैं, then this becomes a gold mine. Business owners will not have to repeat themselves in solving all problems. R stands for repeated delegations. Here the EA, the executive assistant, gives a list of all the tasks that were delegated, but they have been revised say more than 5 times. अब delegations को देने में और करवाने में दिक्कत ये आती है कि कभी कभी team members don't have the right brief on which they have to take the action, और it is a dependency on somebody else जहाँ वो काम करके नहीं दे पा रहा है. Then the business owner needs to step in and they need to help the team member to actually get the ball rolling. And it also may happen कि वो task को divide करना पड़े. So this is how you resolve repeated delegations. Now that you have understood what is the pure concept of the SUM system upgradation meeting, you need to remember a few points while implementing this in your company. Number 1, हमें ये implement करते हुए ध्यान रखना चाहिए that we do it with the full core team. हमारा MDO, Managing Director's Office. Second thing that we need to remember is that we should 100% explain them that the duration of the meeting should not exceed 30 minutes. अगर ये 30 minutes exceed करता है तो business owner का interest lose हो जाता है. Third, we need to remember that we need to definitely do it on a weekly basis so that we can have small improvements and have a cumulative effect. So when are you implementing this pure concept in your meetings and get the best benefit out of it? Growth with Kedia. KD. Hi, if you like our content, then do hit the like button. Do share it with somebody who would benefit from watching this video. Do let us know what you think about our content. It will give us an opportunity to improve. If you're a business owner and you would like to have a one-to-one with me, then there is a link in the description. Go for it. Thank you for watching.